So today we are going to start new chapter, financial sources of business finance. Sources of business finance. So why do you need money? आपको पैसे की जरूरत क्यों होती है? प्लीज आंसर. चॉकलेट खाने के लिए, घूमने के लिए, आपके डेली नीड्स को फुलफिल करने के लिए, आपको एक्टिवा चाहिए उसके लिए, ठीक है. बहुत सारी चीजें हैं जिसके लिए आपको डे टू डे, एक दिन भी आपका एक दिन भी बिना पैसे के गुजर सकता है. योर होल डे विदाउट स्पेंडिंग अ मनी. बेटा, you are using electricity and that is also cost something. Can you spend your one day without money? Areeb? No, sir, we cannot. We cannot spend a single day without spending a single money. आप घर में भी बैठे हैं तो आपकी इलेक्ट्रिसिटी यूज हो रही है. आप टीवी देख रहे हैं, आपका टाटा स्काई का कनेक्शन पर डे पे चार्ज करता है. आप वाटर यूज कर रहे हैं, you are drinking water, it also cost. You have to pay water tax. You are living in a house, you have to pay the house tax. So if you cannot spend a single day without money, how you can imagine a business without a finance? A business cannot survive without adequate finance. Clear? So why do business needs finance? Hamza, Dipanshi, why business needs finance? Dipanshi? Sir, to start up a business, pay To for start the up a premises, business? having funds to pay for a new branch. Very good. And So suppose I'm not advertising, going to open a new branch, then so to advertise, to advertise, run the business, cash to pay staff, wages. very good, salary, Yes, sir. and something else. Purvi, why business needs finance? Yes, to purchase machinery, to purchase furniture, to purchase building, machinery, building, furniture, to pay the salary of the staff, to procure raw materials. Okay, so business needs finance at every step. When you thought an idea to run a business, after that, in all steps, you need finance. So, finance तो ठीक है. What is capital? Areeb, can you tell me what is capital? What is capital? Sir, the money spent for starting up a business, the money spent initially. Yes, that money which is invested in the business by the entrepreneur. That money which is invested by the business in the business by the entrepreneur is the capital. So many times it is not necessary that the whatever entrepreneur is the owner invest into the business is sufficient. ठीक है, आपको पता है रिलायंस किसकी है? रिलायंस
लिमिटेड किसकी है? अनिल अंबानी। ठीक है, अनिल अंबानी और मुकेश अंबानी दोनों की अलग अलग कंपनीज हैं। ठीक है, तो क्या अनिल अंबानी उसको अकेले रन कर सकते हैं या मुकेश अंबानी उसको अकेले रन कर सकते हैं? नो, दे नीड फाइनेंस टू रन अ बिजनेस। एक एग्जांपल देके समझाते हैं आप। मुकेश अंबानी की रिलायंस कंपनी में अप्रॉक्स 10,000 वर्कर्स काम करते हैं। ठीक है, अप्रॉक्स पूरे इंडिया क्या वर्ल्ड में है रिलायंस लिमिटेड, अप्रॉक्स 10,000 वर्कर्स और स्टाफ, अप्रॉक्स, आई डोंट नो द एग्जैक्ट। ठीक है, 10,000 वर्कर्स काम करते हैं अगर, और 10,000 को वो एवरेज सैलरी 30,000 रुपीज देते हैं, वो भी 1 तारीख को। एट फर्स्ट ऑफ एवरी मंथ he pays salary, average salary of 30,000. So 10,000 multiplied by 30,000. What is it? Approx मैं बता रहा हूँ, इससे बहुत ज्यादा हो सकता है। ठीक है, इससे डबल भी हो सकता है, ट्रिपल भी हो सकता है। तो Reliance Limited needs approx 30 crore rupees, 30 crore rupees, 30 करोड़ रुपए उनको चाहिए on every day, every first day of every month. ठीक है, 1 तारीख को उनको 30 करोड़ रुपीस देने ही देने हैं। तो वो 30 करोड़ कहाँ से आएंगे? ठीक है, या उनको एक नई ब्रांच खोलनी है, या उनको नई मशीनरीज लगानी है, या अपने टावर्स लगाने हैं, जियो फाइबर की लाइन खींचनी है, सबके लिए उनको फाइनेंस की जरूरत है। ठीक है, और वो फाइनेंस कहाँ से आएगा? क्या अनिल अंबानी अकेले इतना पैसा लगा सकते हैं? नो, 30 करोड़ तो सिर्फ उनको हर महीने की पहली तारीख को सैलरी देनी पड़ती है। ठीक है, उसके अलावा बहुत सारे और भी वर्क हैं जो उनकी कंपनी करती है और उसके लिए फाइनेंस की जरूरत है। ठीक है, फ्रॉम वेयर दे कैन गेट दैट मनी, वो हम लोग आज पढ़ेंगे। ठीक है, इस चैप्टर में पढ़ेंगे व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ फाइनेंस फ्रॉम विच अ कंपनी कैन गेट मनी और फंड्स। ठीक है, तो सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस। Business finance refers to the money required by a business enterprise to carry out its business activity. तो business finance क्या है? वो फंड या वो पैसा जो कि बिजनेस को रिक्वायरमेंट है टू रन इट्स एक्टिविटीज। ठीक है, टू कैरी आउट इट्स बिजनेस एक्टिविटीज, दैट फंड्स आर रिक्वायर्ड। आप सोच नहीं सकते कितने फंड्स रिक्वायर हो सकते हैं एक बिजनेस को रन करने के लिए। 1 सेकेंड, प्लीज डोंट I said yes. So nature of finance. Nature, a business cannot function unless adequate funds are available. तो बिजनेस कभी रन नहीं कर सकता है जब तक उनके पास प्रॉपर सफिशिएंट फंड ना हो। ठीक है, फंड्स की कमी ना पड़े। अगर मैंने अभी एक एग्जांपल दिया था, 30 करोड़ रुपए सैलरी उनको देनी है हर महीने की पहली तारीख को। अगर उनके पास 29 करोड़ है, 29 करोड़, then they will be short of funds and they cannot pay their staff on time. So it will humiliate the staff and the staff will not work properly and it will affect negatively to the company. ठीक है, तो they have to pay on time. जो भी उनको फंड्स का रिक्वायरमेंट है उतने फंड्स उनके पास टाइम पे होने चाहिए। तो a business cannot function unless adequate funds are available.
The initial capital contribution by the entrepreneur is not always sufficient to take care of all requirements of the business. यानी जो इनिशियली कैपिटल इन्वेस्ट होती है, जो कैपिटल इन्वेस्ट करता है ओनर, दैट इज नॉट सफिशिएंट. देखिए छोटे बिजनेस के लिए तो सही है, छोटे बिजनेस यानी एक जनरल मर्चेंट हो गया या एक ठेले वाला हो गया, तो इस टाइप के बिजनेस के लिए तो सफिशिएंट मनी है. लेकिन एक बड़ा बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आप अपने घर के आसपास जो बड़े मॉल्स देखते हैं, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स देखते हैं, ठीक है, उनको भी इतना पैसा उनके ओनर्स के पास नहीं होता है कि वो पूरा मॉल अपने दम पे खड़ा करता है. ठीक है, नहीं, और होता भी है तो वो दिखा नहीं सकते, गवर्नमेंट को दिखा नहीं सकते, नहीं तो दैट विल बी कंसिडर एज ब्लैक मनी एंड दे विल बी फाइर्ड. तो sufficient money, the initial capital contribution by the entrepreneur is not always sufficient to take care of all requirements of the business. The business person therefore has to look for different other sources from where the need of finance can be met. तो बिजनेस सोर्सेस को, बिजनेसमैन को दूसरे सोर्सेस ढूंढने पड़ते हैं जहां से उनके फाइनेंस की जरूरतों को पूरा किया जा सकता है. ठीक है, अ क्लियर असेसमेंट ऑफ द फाइनेंशियल नीड्स एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ वेरियस सोर्सेज ऑफ फाइनेंस. तो हमको ये पता करना पड़ता है पहले कि हमको एग्जैक्टली कितने पैसे की जरूरत है. 1 करोड़, 2 करोड़, 100 करोड़, 200 करोड़, 500 करोड़, कितने की जरूरत है और उन जरूरत को और किन सोर्सेस से पूरा किया जा सकता है. तो अब बिजनेस पर्सन therefore has to look for different other sources and from where the needs of funds can be met. Then a clear assessment of the financial needs and identification of various sources of finance. तो हम पहले निकालते हैं कि हमको कितनी जरूरत है, फंड्स की कितनी जरूरत है और कौन से डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स हमारे पास हैं जिससे हम अपनी जरूरतों को पूरी कर सकते हैं. ठीक है, a clear assessment of financial needs and identification of various sources of finance therefore is a significant aspect of running a business organization. The need of arises from the stage, okay, need of finances arises from the stage when we have started the business. Then an entrepreneur makes a decision to start a business. जैसे ही एक एंटरप्रेन्योर बिजनेस को स्टार्ट करने का डिसीजन लेता है, वहीं से फाइनेंस की जरूरत स्टार्ट हो जाती है. ठीक है, उसको बिल्डिंग खरीदनी है, उसको मशीनरी खरीदनी है, उसको प्लांट लगाना है. ठीक है, एंड इट ऑल डिपेंड्स कि वो किस टाइप का बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है. ठीक है, तो दिस इज द नेचर ऑफ बिजनेस. Then there is 2 types of capital. Can anybody tell me which types of needs business have? Which 2 types? Can anybody tell me? Purvi? Sir, Fixed capital and working capital. Working capital. So 2 types of needs are there: fixed capital requirements and working capital requirements. Fixed capital जैसे plant and machinery, building, vehicle, ठीक है, etc. वो कैपिटल जो बिजनेस में लगाने के बाद लॉन्ग टर्म तक चलती है. भाई हमने एक प्लांट लगाया, एक फैक्ट्री लगाई, तो वो 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, 1 साल के लिए नहीं लगाई हमने. That will continue serving me for the next number of years, maybe 10, 12, 20, 50 years. So fixed capital requirements, it all depends what type of business, what nature of business you are going to start. If you are going to start
a manufacturing concern, you need plant and machinery, building, etc. And you need lots and lots of capital. And if you are opening a showroom, you need lesser than the manufacturing concern. And if you want to start a general merchant shop, you need lesser fixed capital. It depends on the nature of business. And secondly, working capital. Working capital requirements which needs for day-to-day business activities like paying of salary, rent, electricity charges, water taxes, and procurement of raw materials, etc., etc. So there are two types of requirements business have. One is working capital requirements and other is fixed capital requirements. Working capital requirements is to fulfill the needs of day-to-day business activities. And fixed capital requirements is for meeting the long-term needs of the business. Okay. Read this part of the chapter from your book, and if you have any problem, you can always ask me. I'm always available. And next period is also mine. So wait for another 15 minutes and I will start the new topic.